Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Mataji. Dandavat pranams. Hope you are doing well, Mataji. Yes, yes, all good here. Yes, thank you. Very nice. Very, very nice. Hare Krishna. So let's do the Mangalacharana and then we shall resume to our Shri Īśopaniṣad session. Hare Krishna. Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam yena bhutale Swayam Rupah Kadamayam Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Gurun Shri Yudapad Kamalam Shri Rupam Vishnavam Cha Shri Rupam Sagrijatam Sahagana Raghunatha Vitam Tam Sajivam Sadhvetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakha Vitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sudai Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pachat Deshitarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Srila Prabhupada ki jai, Gurudev Maharaj ki jai, Samved Bhakta Vrinda ki jai, Jai Jai Shri Radhesha. Hare Krishna everyone. And Hare Krishna Ram Priya Prabhuji. Hare Hare Bol. Hare Krishna, Varun Pati. Hare Krishna. So good to have you, Prabhuji. So for everyone's benefit, Ram Priya Prabhuji is very learned, and Prabhuji is doing Bhakti Vaibhav with me in the morning. Well, it was morning at our place. It's 9:30 here in London. So in the morning, we do Saturday, Sundays, we do a couple of hours. So Bhakti Vaibhav is the systematic study of Srimad Bhagavatam. So we are doing first 3 cantos, and currently we are about to finish soon in few months. But we've been doing over a year now, and we are on the last canto, canto 3, and Prabhuji is there with us. So I invited Prabhuji, if Prabhuji would like to come along, which of course he has. And going forward, if Prabhuji would like to lead any of the sessions. So as we always invite devotees, and as and when devotees are available, they join, they come and they contribute. Like Tulsi Sundari Mataji was there for a couple of sessions, and then she could not make last time, I think, and she will not able to make it today, but she will be back after that. So Hare Krishna. It's always a pleasure to be in the association of devotees. Hare Krishna. Let's quickly recap Shri Īśopaniṣad, what we have been discussing. So Rampriya Prabhuji, feel free to pitch in any time you like. So feel free if you like to raise hand or say anything in the chat. Otherwise, just unmute yourself and say. We rather prefer to have the discussion than the lecture. Of course, if most of the time I'm the only one who keeps speaking, that's the reason. It feels like lecture sometimes,
but trust me, it's not. It's more like a discussion, and this is the forum we have put together. Hare Krishna. और हमारे जो ये सेशंस होते हैं सिर्फ इंग्लिश में नहीं, हिंदी में भी होते हैं. तो हम इंग्लिश हिंदी दोनों में कोशिश करते हैं कन्वर्स करने की. तो आप जिस भी भाषा में चाहें कर सकते हैं. तो हिंदी भाषी भक्तों को भी हरे कृष्ण. हरे बिल्कुल प्रभु, थैंक यू वेरी मच. एक्चुअली मैं अभी यहाँ सीखने के लिए ही हूँ. बहुत टाइम से मैंने ईशोपनिषद रिवाइज नहीं किया है, तो आई एम हियर टू लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ यू. सो थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण. वेरी नाइस. ये आपकी ह्यूमिलिटी है प्रभु जी जो आप ऐसा कह रहे हैं. आई एम श्योर इट्स दिस इज द बेनिफिट ऑफ डिवोटी कॉन्ग्रेगेशन. जो श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसा संग दिया है भक्तों का, और किसी भी कोने में अगर हम चले जाएं वहां हमको भक्त मिलते हैं, और यही फायदा होता है कि वहां जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम अपने फैमिली मेंबर से मिल रहे हैं. मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ. मैं लंदन से मिडल ईस्ट गया था, मैं दुबई गया, अबू धाबी गया, मस्कट गया, और वहां पे मैं रहा भी, कई साल वहां पे रहा. तो वहां पे तीनों ही जगह जहां पे भी मैं गया मुझे भक्त मिले, और बिल्कुल इस तरीके से लगा कि मैं अपने फैमिली मेंबर से वहां पे मिल रहा हूँ. तो सर्टेनली ये चीज प्रैक्टिकल है, और अभी भी वो भक्त साथ में है. जिनके साथ मैंने भक्ति शास्त्री किया वो भी साथ में है, जिनके साथ में टीटीसी किया, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, वो भी साथ में है, और जिनके साथ में भक्ति वैभव कर रहे हैं वो प्रभु जी भी साथ में है. हरे कृष्णा. और जैसे हरीश वर्मा प्रभु जी हैं, ऐसे भी काफी प्रभु जी हैं जो आई थिंक यूट्यूब के माध्यम से जुड़े. तो क्योंकि ये सेशन यूट्यूब पे लाइव जाते हैं, तो यूट्यूब पे भी अगर कोई सुन रहा हो और अगर क्वेश्चन पूछना चाहे, किसी भी चीज की कोई जिज्ञासा हो, तो हम उस पर भी बात कर सकते हैं. यूट्यूब लाइव मेरी कोशिश होती है, और उसी पे यूजुअली मेरे को ऐसा कहा गया है कि आप हिंदी में भी बोलें, आप इंग्लिश बहुत बोलते हैं. तो इसलिए कोशिश है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भक्तों को की सेवा की जा सके. हरे कृष्णा. So let's continue where we left. So, or maybe a quick recap from the beginning, and then we will continue where we resume. Because we only do the session once in a week. There are some sessions like TTC I did. So Bhakti Vaibhav sessions, they happen twice in a week, Saturday, Sunday morning. TTC I did, that happened 5 days in a week, 3 hours every day. And very intense, I would say. But these sessions we do, they are very light-hearted. We do once in a week. So it's always a good practice to resume. Before we resume, let's recap. तो हमने अभी तक जो श्री ईशोपनिषद में किया है, हम उसका रिकैप करते हैं. बहुत ही जल्द, बहुत ही क्विक. Upanishad. So what do we understand the word Upanishad itself in the Sanskrit? We have the technique we call Sandhi Vichhed. So we break down the word Upanishad. So it says Upnishad, near down to sit. So sit down near. Sit down next to whom? Near to whom? Our spiritual master. तो उपनिषद वो कथाएं हैं, उपनिषद के अंदर वो ज्ञान है जो शिष्यों ने अपने गुरु से लिया, और किस माध्यम से लिया? उनके पास बैठ कर लिया. इस वजह से ये जितना भी ज्ञान है उसको हम उपनिषद कहते हैं. और उपनिषद कहाँ पाए जाते हैं? वैदिक विजडम, वैदिक कल्चर के अंदर जो वेदास हैं, वेदास के जो अंत है, एंड है, जिसे हम वेदांत भी कहते हैं, वहां पे उपनिषद पाए जाते हैं. तो अगर आप किसी भी वेदों को लेंगे, 4 वेद में से कोई भी वेद, तो वेद के जो आखिरी के हिस्से हैं उसमें से उपनिषद निकले हैं. So Upanishads are literally the end of Vedas, and that's the reason they are also called Vedanta. And Vedanta study, the comprise, the essence of all the Upanishads are also what we call Mahakavyas. So there are various Mahakavyas like Aham Brahmasmi. So they are very renowned and they are very famous. And some, for example, Advaita, they follow only those. And that's part of one of the school of thought from Vedic culture. So Rig, Yajur, Sam, Artha, as we can see, as we have discussed in the past, they all have different purpose behind them. Now we have briefly seen that what do we have majority of Vedas discussing is Karma Kanda. And for the Karma Kanda, we need demigods because we would like to have the fruits of it. So वेदों में जो कर्म कांड है वो हमारी भौतिक इंद्रियों की संतुष्टि के लिए, जो देवी देवताओं के पूजन
है उसके ऊपर बहुत कुछ वेदों में लिखा हुआ है। अगेन इस चीज के ऊपर हम स्ट्रेस देते हैं कि जो देवी देवताओं की पूजा है वो बिल्कुल भी वेदों में निषेध नहीं है, इंक्लूसिव है, वो हमें करनी चाहिए। लेकिन जो भक्ति है वो देवी देवताओं की नहीं होती है, वो सिर्फ भगवान की होती है। सो अगेन द वर्शिप, द प्रेयर्स, they could be to demigod, hopefully not for material desires, depending on which platform we are. But when it comes to bhakti, the devotional services, then they all belong to the Lord Krishna. That's from the Vedas. So we do need to be very clear on it. And that's the reason what kind of material desires we have, based on that, it's been given to whom we should pray to, whom we should worship to. That's for the demigods. But as Krishna explains in Bhagavad Gita, chapter 15, and there are various verses otherwise, that if we water the roots of the tree, we don't need to water the branches, the twigs, the fruits, the flowers. So Lord Krishna is that root. If we satisfy Lord Krishna, then all the demigods will get satisfied as well. तो जिस तरीके से हमने बात करी कि अगर एक पेड़ है, उस पेड़ की जड़ों में हम पानी देते हैं, तो हमको अलग से जो पत्तियां हैं, जो फूल हैं, जितने भी उस प्लांट के, उस पौधे के अलग अलग हिस्से हैं, उसके ऊपर हमको कुछ देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पानी। हरे कृष्णा। माता जी प्लीज। Hare Krishna, Prabhuji. Yes, is there a fine line between the worship and the bhakti? Yes, yes. Very, very nice question, Mataji. Thank you so much. So, bhakti, now a lot has been said on bhakti. That what is bhakti and what's there for the worship. Now, worship usually has a purpose. So whenever we do the worship to someone, and not only to the demigods, when we are in the office, it says, oh, he worshipped to his law, he worshipped to his boss. A lot of times people say that as well. So worship always have some hidden agenda behind it. So if whether we want this or we want that, material or spiritual. Now, bhakti does not have any hidden agenda. Somebody could also do worship where the reason, the purpose of the worship is only and only spiritual upliftment. And that could be part of bhakti. But when we do bhakti, no worship is there, we just do bhakti, then that could be devotional service. So bhakti itself is actually just devotion. But Srila Prabhupada ji explained it very nicely that devotion is the abstract. We have to add service to it. Otherwise, how we will do bhakti? But when we will do bhakti, we will do bhakti seva, devotional service, then it will get even more clarified. And let's listen from Rampriya Prabhuji. Prabhuji, please. Yes, Prabhu, exactly the same what you are telling just now. I was thinking of the same. So there is this verse in Bhagavad Gita, Yoginam api sarvesham madgaten antaratmana avan bhajate umam same yukta tamo mata. So there Prabhupada in the purport says that bhaj actually means worship, but actually worship also means service. So as Varunpati Prabhu is telling, that when you worship Krishna, that nourishes your devotion. So it basically helps you to get to the goal of bhakti, get to the goal of life. So worship acts as a means towards bhakti in general. But yeah, there are other kinds of worship also, which Varunpati Prabhu is explaining, like worship of demigods, worship of cricketers, worship of film stars. So those might not take you to actual bhakti. Yes, Prabhu. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji. Yes. So worship is with a purpose. That purpose could be material. The purpose could be spiritual. If it's a spiritual, then also there are different stages. Like the devotee itself could be neophyte or uttam.
So there could be different divisions of that spirituality as well. Ajay ji, please. Krishna Prabhuji, I have a question here. Like as we always believe, bhakti is the best way to reach Lord Krishna. Then why we have to follow these Vedas? Because that's the only way we can achieve the most we can. So is any point just following these Vedas? Is there is no such a way you can get it, even though you do this one. But the best way is mercy of Krishna only. Very good. Very good question. Very good question, Ajay ji. This is a very, very valid point, that why, if the best route is available, why do we have to take other routes? Or why there is a description of different routes given? If the devotion is only there, especially if we see chapter 2 Bhagavad Gita, Bhakti Marg is there, then why Krishna explained Karma Marg, Yoga Marg, Dhyan Marg, Jnana Marg? Why? Very good question. And it's very, very, very important to understand this, because different people, or if I say different devotees, let's consider everyone as devotees. Whether people, they understand it or not, everybody is a devotee. All the devotees, they are on different platforms, maybe based on their karmas, maybe based on their gunas, maybe based on their circumstances. So sometimes a great devotee got stuck in, a great devotee, not a pure devotee, a great devotee got stuck in such a circumstances where it's not very, very, very encouraging towards devotion. So the devotion will go down a bit. So circumstances do impact. So previous karma, gunas, and then the circumstances. Based on that, different options are available. So if we say chapter 3 Bhagavad Gita, different karmas are there. So one are vikarma, which is no, we should never do. For example, we should not steal, and we should not, well, 4 regulative principles are there in ISKCON. We should not do any of those, right? They are bad things to do. But then we have karma, or we call them sakarma. So vikarma, sakarma, or just karma, and then we have akarma. So what is karma or sakarma? Is that karma where when we do good things, we have this feeling that we are doing good things, right? This is the way I put it through. So vikarma is the negative. Karma is where you do good things, you try to do good things because you would like to have something. You know you are doing good things, and in your mind, because you are doing good things, you would like to get good fruits out of it. So this is what we call fruitive karmas, right? And then we have akarma. We just do good karmas because we are supposed to do it, not because it's good. No, it's like a person tells truth all the time because his parents has told, or because he knows that's supposed to be there, or he knows if I will lie, then it's a bad thing. But there could be another person who always say the truth, not because of the fear, not because he or she wants something, or maybe because there is a fear from someone. No, because he or she knows that's the best thing to do, right? So vikarma, negative. Karma, where you do good things, but you have fruitive, that I'm doing good, so good will happen to me. But then you have a karma, when you do good things, you don't expect anything in back. So this is one way of comparison. Now coming back to the questions, different people, those people who cannot reach, who are doing karma or sakarma, they are not to the level where they can do a karma. So rather than asking them, because it's very hard for them to do a karma, what we will do, we say, okay, do karma, do sakarma, at least don't do vikarma, right? So this is gradual. Somebody is doing vikarma, you say, at least do sakarma, do good things. Why? Because good things will happen to you. And then slowly, gradually, your nature will be like this. You will do good, not because you would like to have something, because you have realized that your spirit, soul, you are not this material body.
So this is a gradual. Now, why to worship to demigods? Because there are many those who don't even do that. Of course, if they can get into the bhakti devotion straight away, great. But a lot of time they can't. So what do? We suggest do these things so good things will happen, because their consciousness is not developed so much that they can reach to the final goal. So it's a gradual process. This is what Krishna says. If you can't do this, do this. If you can't do this, at least do this. If you can't do this either, this is the only option left. So Krishna has given many different options. Hare Krishna. So Ajay ji, I hope that answers the question. Yes, thank you, Prabhuji. हरे कृष्ण. अजय जी ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा कि अगर हमें पता ही है कि भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तो फिर वेदों में क्यों है कि हमको देवी देवताओं का भी पूजन करना चाहिए. और जो हमने डिस्कस किया वो यही कि देवी देवताओं की पूजा जरूरी है उन लोगों के लिए जो भक्ति मार्ग सीधे सीधे नहीं ले पाते, क्योंकि उनके जो कर्म हैं, उनके जो गुण हैं, उनके जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जहां वो रहते हैं, जिस फैमिली में उनका जन्म हुआ है, या जिस तरीके की लाइफस्टाइल वो बिता रहे हैं, उनके लिए भी ये सपोर्टिव नहीं है कि वो भक्ति कर पाए. तो कम से कम वो गलत काम ना करें, उससे बेटर है कि वो देवी देवताओं की पूजा करें, क्योंकि उनको चाहिए कुछ गेन, फ्रूटिव गेन्स चाहिए कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो मेरे साथ अच्छा होना चाहिए. तो अभी वो भक्ति को नहीं समझ पाएंगे, देवी देवताओं को समझ पाएंगे शायद, क्योंकि देवी देवता उनको फ्रूटली बेनिफिट्स देंगे. तो उसके बाद अगर वो अपने देवी देवता को फॉलो करेंगे तो देवी देवता भी उनको भगवान कृष्ण की ही भक्ति में लगाएंगे, क्योंकि सभी देवी देवता जो हैं उनके बारे में अगर हम पढ़ें ग्रंथों में तो वो भगवान की ही भक्ति में लगाते हैं. So we have seen a lot of examples. Lord Brahma himself has written Brahm Samhita. Indra in the past time of Lord Krishna at Govardhan Leela, Indra has come down to say. So Indra is the leader of all the demigods. What else we think about rest of them? So if we hear the demigods, we can understand what demigods are saying. So even if somebody is doing demigods worship, we don't need to correct them. However, of course, we can ask few questions, we can suggest few other things, but we don't need to criticize anyone. And straight away, anyways, no one will understand. So again, it's a gradual process, slowly, gradually. So, and we also do, though worshipping, because all of them, they are Vaishnavas. All of them, remember, we are on planet Earth, they are in heavenly planets. They have done a lot of pious activities in their past, and that's the reason they have it. So we can easily worship to them. But what do we ask them? Do we ask them material things, or we ask them the bhakti? We ask them devotion. That's the main thing. So when Ganesh Chaturthi come, we can do the fast. Shivratri come, we can do the fast. But what do we ask? That's the main thing. What should we ask? Material things or the spiritual? Dhruv Maharaj, what did he ask? Prahlad Maharaj, what did he ask? So these are the things we need to be conscious of. Hare Krishna. So then we have seen the conclusion. We have seen some references. We have seen the Srila Prabhupada's quotes from Bhagavad Gita. Krishna's instruction in Bhagavad Gita. We have seen those references as well. Then the Upanishads itself, spiritual being, for the spiritual life, all those secrets will be given in very, very concise form. Remember in Shri Īśopaniṣad, there are only 18 mantras there. अगर हम ध्यान रखें श्री ईशोपनिषद में सिर्फ 18 मंत्र हैं, तो हर एक मंत्र बहुत डिटेल में हमको भगवान के बारे में बताता है. श्री ईशोपनिषद, सो ईश्वर के बारे में बताते हैं. उपनिषद में ईश्वर और भगवान के अंदर भी डिफरेंस बताया गया है कि ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, इनकी भी डेफिनेशन है. लेकिन अद्वैत वाले उस डेफिनेशन में ज्यादा बिलीव करते हैं, ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं. लेकिन द्वैत के अंदर हम जीव और भगवान को समझते हैं और भगवान और ईश्वर को समान मानते हैं. तो उस डिफरेंस के अंदर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जीव हैं, जीवात्मा, और भगवान है परमात्मा. हम भगवान को मानेंगे. So we have discussed briefly 3 stages
Brahman realization, Paramatma realization, and Bhagwan realization. Okay, so right. Shruti, Smriti, Nyaya. Nyaya, Vedanta Sutra. Shruti, what we hear. Smriti, what we remember. तो हमने देखा कि अगर हम वेद पुराणों के ज्ञान को देखते हैं तो 3 हिस्सों में बांट सकते हैं. वेदांत सूत्र, again laws, commandments. With Nyaya philosophy. Nyaya itself is decision, black and white. You do this, this will happen. Very logical. But then the broader categorization. अगर हम बहुत मोटे मोटे 2 हिस्सों में बांटें सारे वेद ज्ञान को, तो श्रुति जो सुना डायरेक्टली और स्मृति जो हमने किसी ने सुना और सुन के कहीं किसी को बताया. ब्रह्मा माध्य गौड़िया संप्रदाय. ब्रह्मा जी, माधवाचार्य जी, गौड़िया, श्री चैतन्य महाप्रभु जी संप्रदाय. ब्रह्मा माधव गौड़िया संप्रदाय. ISKCON belongs to ब्रह्मा माधव गौड़िया संप्रदाय. ISKCON जो एक ऑर्गेनाइजेशन श्रील प्रभुपाद जी ने अमेरिका में बनाई, सिर्फ एडमिन पर्पसेस से उन्होंने हमेशा कहा कि वो ब्रह्मा माधव गौड़िया मठ को बिलोंग करती है. हरे कृष्णा. हरीश जी प्लीज. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हरे धन्यवाद. प्रभु जी, जैसे कि ये श्रुति है, श्रुति में वेद और उपनिषद आते हैं, तो हमारे पास 4 वेद है और 108 उपनिषद है, और स्मृति में पुराण आते हैं, 18 पुराण है. वैसे न्याय में भी तो कुछ आता होगा ना प्रभु जी, इसके बारे में बताइए. जी, न्याय जो वेद उपनिषद पुराण इतिहास, इसी के अंदर से जो फंडामेंटल्स निकलते हैं, जो कमांडमेंट्स, जो लॉज बनाते हैं, वही न्याय में आते हैं. न्याय जो वेदांत सूत्र है वो पूरे वेदों के ज्ञान को सूत्र कमांडमेंट्स में बांटा गया है. मतलब कि जैसे हम कहते हैं महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि, जिज्ञासा. तो एक भागवत में एक वर्ष है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा. ये वो महावाक्य नहीं है, लेकिन महावाक्य का एसेंस है. वो जो महावाक्य है वो वेद पुराण की ही है, लेकिन वेद पुराण के अंदर जो बहुत सारी नॉलेज दी हुई है, उसके अगर हम अपने सारे वेद ज्ञान को लगाएं तो करीबन 4 लाख वर्सेस बनते हैं. 4 लाख वर्सेस. तो 4 लाख वर्सेस को जब हम उस पूरे ज्ञान को जब हम बहुत सूक्ष्म रूप में सूत्रों में ले आते हैं, कमांडमेंट्स में या लॉज में ले आते हैं, सिर्फ एक सेंटेंस में, 2 सेंटेंसेस में, ऐसे 6-7 सेंटेंसेस हैं, उन्हें महावाक्य कहते हैं. ऐसे सूत्र हैं जो कि और थोड़े से ज्यादा हैं. जब उसी नॉलेज को हम इतना कंसाइज कर देते हैं, उसको हम न्याय कहते हैं. फिर बात ऐसे होती है न्याय के अंदर कि जब हम लॉजिकली बात कर रहे होते हैं तो हम उस सूत्र का रेफरेंस देते हैं कि उस सूत्र के अकॉर्डिंग, जैसे हम लॉज में कहते हैं, लॉज का रेफरेंस देते हैं हम कि इस लॉ के अकॉर्डिंग, इस एक्ट के अकॉर्डिंग ऐसा है. तो उसी तरीके से न्याय के अंदर लॉजिकली डिस्कशन के बारे में, और वो जो न्याय का सूत्र है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बात सही है और ये करनी चाहिए और ये नहीं करनी चाहिए. न्याय फिलॉसफी जो है वो इस तरीके से चलती है और इसके ऊपर बात होता है. तो ऐसा नहीं है कि वेद उपनिषद और पुराण इतिहास अगर श्रुति और स्मृति में बढ़ गए तो न्याय के लिए कुछ नहीं रहा. यही चारों का ज्ञान न्याय के अंदर यूज होता है. सिर्फ एक पर्सपेक्टिव अलग है देखने का न्याय फिलॉसफी को जो लोग फॉलो करते हैं, और बहुत ही अच्छा है. लॉजिकल, जो लोगों को लॉजिकल, और हम अभी और आगे बात करेंगे लॉजिक की ही, तो वो न्याय के अंदर ज्यादा मिलता है. भक्ति में वो इतना नहीं आएगा क्योंकि भक्ति में भाव होता है, लेकिन न्याय के अंदर लॉजिक होता है. आई होप हरीश जी. प्रभु जी से ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि छोटे छोटे डायलॉग्स ऐसे. हाँ जी, जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा. छोटे छोटे से डायलॉग्स जो, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो डायलॉग्स वेद में, उपनिषद में, पुराण में, इतिहास में कहीं हो सकता है वो कहीं हो ही ना, लेकिन उस जो पूरा ज्ञान है
उस ज्ञान को इकट्ठा करके ये सूत्र बनाया गया। तो कोई कह सकता है कि वो जो, जैसे हम रामायण की बात करते हैं तो उसमें कांड आते हैं, उस कांड के अंदर से ये सूत्र निकाला जा सकता है। जैसे हनुमान जी का सुंदर कांड है, तो उससे हमने एक सूत्र निकाला। ऐसे राम प्रिय प्रभु जी, प्लीज आप कुछ ऐड करें। Yes, Prabhu, just this is a very nice topic to discuss. I think Kana Prabhu has asked this question, no? हरीश जी। Harish Prabhu, yeah. Well, it's a very nice question. So I will share what I have heard from my authorities. So basically, Vedanta Sutra is the essence of all the Vedas. So it is not dry philosophical speculation, but it contains the juice of bhakti. So as Varunpati Prabhu is telling that every scripture has some commandments, has some important sutras on the basis of which the entire scripture is written. So I was just thinking of giving an example. For example, there are 4 basic books which Prabhupada has given to us: Nectar of Devotion, Srimad Bhagavatam, and Bhagavad Gita. So Nectar of Devotion, Parivasha Sutra is Anyabhilashita Shunyam, Gyan Karmadya Navritam, Anukulyena Krishnanushilanam, Bhaktir Uttama. So this verse defines the definition of bhakti. And all the other verses of Nectar of Devotion revolves around this verse. And similarly, Srimad Bhagavatam defines that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Ete chamsa kala punsan Krishnastu Bhagavan Swayam Indrani Vyakulam Lokam Predayanti Yuge Yuge. So this verse is the Paribhasha Sutra of Srimad Bhagavatam. So all the other verses you can basically they can come in the broader range of this verse. So this verse is the root verse of the entire scripture, which summarizes the essence of the entire scripture. So it's just like 10 commandments, which is given in Christianity, that the entire religion is condensed in those commandments, and any other following or any other shloka, you can indirectly connect to one of those commandments or indirectly connect to the Paribhasha Sutra. So that Vedanta Sutra is the essence of all scriptures, as Varunpati Prabhu also explained. Yeah. हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच Thank प्रभु you. जी। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से राम प्रिय प्रभु जी ने कहा कि जो सूत्र है वो उसका एसेंस है, और बिल्कुल ऐसे हमारे मुख्य वर्सेस हैं जिनको मदर वर्सेस भी जीव गोस्वामी जी ने कहा है, और उनको फॉलो करके कि उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो ऐसे हमें करना चाहिए. सो दैट्स व्हाट वी कंसीडर एज सूत्र. हरि बोल. थैंक यू सो मच. वेरी वेरी नाइस. Thank जी you. जी. हरे कृष्ण. हरि बोल. Great. So let's continue. So we shall. Yeah, I think we did start. So yeah, we very briefly we touched base scholars and acharyas. So scholar could be somebody who knows the language very well, but acharyas who understand the essence of it. So somebody knows the Sanskrit or English, can read Sanskrit or English, but if the literature is written in that language, doesn't really mean that person will understand that better. तो हमने देखा स्कॉलर और आचार्य के बीच का फर्क. स्कॉलर हम उन्हें कह सकते हैं जिनका भाषा के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा होल्ड है. कोई इंग्लिश के टीचर हैं तो उन्हें इंग्लिश बहुत अच्छे से आएगी, लेकिन आचार्य वो होते हैं जिनको भाव अच्छे से समझ में आता है. तो अगर किसी को इंग्लिश अच्छे से आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम, जिसको इंग्लिश अच्छे से समझ आती है वो भगवत गीता अच्छे से पढ़ पाए, या केमिस्ट्री की कोई बुक हो, बायोलॉजी की बुक हो, वो अच्छे से पढ़ पाए क्योंकि वो इंग्लिश में लिखी है और इंग्लिश अच्छे से आती है. नहीं, सब्जेक्ट मैटर समझना बहुत जरूरी है. वो आचार्य को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है. हरि हरि. So these are the acharyas we follow. Rupa Goswami ji is one of the Shad Goswami, one of the 6 Goswamis in Vrindavan. And then Shruti, Smriti, the reference, analogy, mother or sisters. ये हमने देखा. Yes, I think, okay. The next slide was the last slide, so we shall resume there, but it's always good to go back and revise what we have already been. Isha, one of the verses we will see, Isha Vasyam.
So Isha is for the Lord. Isha is the supreme controller. And there is only one supreme controller. We try to control things, but sooner or later we realize we are not the controller, but we try. तो ईशा वास्य वर्ड आएगा, और जो श्री ईशोपनिषद में ईशा है, ईशा का मतलब सुप्रीम कंट्रोलर। तो हम जब भी ये वर्ड देखें तो हम समझें कि यहाँ पे भगवान की बात हो रही है, लॉर्ड की बात हो रही है। उसके बाद हमने संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ज्ञान के बारे में देखा कि क्या रिलेशन है भगवान के साथ में, क्या गोल है हमारा, और क्या प्रोसेस है। तो अगर गोल हमारा भक्ति है, कृष्ण प्रेम है, संबंध जीवात्मा और भगवान परमात्मा के बीच में क्या है। अब भक्ति जो है, डिवोशनल सर्विस जो है, वो प्रोसेस है। सो अगेन द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉर्ड एंड देन द गोल इज देयर to go back to the Godhead, to reach to that consciousness, so we will be in Krishna consciousness all the time. Then what is the prayojan? How do we do the process? Process has been explained as the devotional service, the bhakti. अगर हम भक्ति करेंगे तो अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। We have discussed this. Now, this is what we were discussing. Srila Prabhupadaji's purpose for the introduction. Now, again, introduction is not actually the part of Shri Īśopaniṣad. Introduction was the lecture given by Srila Prabhupadaji for very first time when he started Shri Īśopaniṣad, and that was here in London, in Conway Hall. 6th October 1969, and that the whole lecture was the introduction, and that introduction is there in the introduction of Shri Īśopaniṣad, what we get in ISKCON now, and that gives us the foundation, and this is what we are discussing. This is what we are discussing. So the very first thing, definition of Vedas, what we have seen, and briefly we will touch base what Vedas are, why Vedas, that's important, and how. So what, why, and how. So what briefly we have seen what Vedas are: Smriti, Shruti, Nyaya, and different Vedas, Upanishads. Need. What is the need? We understand what Vedas are, but what is the need? That's what been split into different paragraphs. तो हमने देखा जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन श्री ईशोपनिषद का पार्ट नहीं है, लेकिन ISKCON के अंदर अगर आप श्री ईशोपनिषद लेंगे तो उसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन जो मिलेगा, वो इंट्रोडक्शन वो है जो श्रीला प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर के अंदर यूज किया था 1969 में। और उसके अंदर प्रभुपाद जी ने ये बताया है कि वेद हैं क्या, वेदों के बारे में अगर किसी को जनरल नॉलेज नहीं है वो, उसके बाद में वेदों को फॉलो क्यों करना चाहिए, व्हाई, क्यों, और उसके बाद कैसे फॉलो करना चाहिए, हाउ। तो व्हाट, व्हाई एंड हाउ क्या है वेदांत, जो हमने ब्रीफली टच बेस किया। व्हाई क्यों करना चाहिए, और कैसे। तो क्यों और कैसे हम देख रहे हैं, हाउ वी विल सी लेटर, व्हाई वी विल सी नाउ। Our knowledge is imperfect. So this is what we have discussed it before. In the last session, we discussed the 4 things. Our senses are imperfect. Because our senses are imperfect, we get illusion. Because we get illusion, we make mistakes. Because we make mistakes, we develop cheating propensity. Because we would like to hide our mistakes. तो हमने देखा कि क्यों वेदों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी इंद्रियों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है वो इम्परफेक्ट है। जैसे हमने कहा चश्मे की जरूरत है, दूर का दिख सकता है तो सुन नहीं सकता, दीवार के पीछे कोई है वो सुन सकता है तो दिख नहीं सकता। हमारी इंद्रियों की लिमिटेशन है, और लिमिटेशन है, इंद्रियां इम्परफेक्ट है, इसकी वजह से हमें इल्यूजन होता है। जैसे कि फोन पे किसी से बात हुई तो हम नहीं गैस कर पाएंगे कि कौन है, हमें लगेगा कोई किसी और की आवाज है। जैसे 2 भाइयों की आवाज बहुत मिलती है तो हम इल्यूजन में पड़ जाते हैं। रेगिस्तान के अंदर दूर का पानी है, हमें पानी दिखेगा, इल्यूजन में पड़ जाते हैं। तो इस इल्यूजन की वजह से हम
गलतियां करते हैं, हम गलतियां करते हैं। अब वो गलतियां अगर होती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, वो गलतियां होती हैं तो हम गलतियों को छुपाने के लिए झूठ बोलेंगे या फिर चीटिंग करेंगे। तो ये 4 प्रॉब्लम्स जो हैं हमको होंगी। Imperfect senses will lead to illusion. Illusion will lead to mistakes, committing mistakes, and mistakes will lead to develop cheating propensity. That's the very first thing we notice. Then Vedas knowledge is for all. It's not limited. The knowledge in Vedas is for all. जो वेदों की नॉलेज है वो सभी के लिए है और सेम समान है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें सूरज सभी के लिए है, और अगर हम सूरज से बाहर आए, हम ये कहें सूरज तो चलो है सबके लिए, ठीक है, हम समझ सकते हैं, लेकिन वैदिक ज्ञान कैसे सबके लिए? वेदों के अंदर आयुर्वेद है, वेदों के अंदर अष्टांग योग है, जो अगर हम देखें प्रैक्टिकल रूप से सभी फॉलो करते हैं। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स, sun is there for everyone, we can understand, irrespective of what we believe or what we don't believe, sun is ready to give the sunlight to everyone. But similarly, if we say sun is not sun doesn't belong to the Vedas, but if we see just the Vedas, there are lots and lots of things in the Vedas which are readily available to everyone, and a lot of people, they make benefit out of it. For example, the yoga we do. So now yoga is Ashtanga yoga, and in Ashtanga yoga, the part of we do very briefly, we call it Hatha yoga, the physical movements, the postures, and that's available for everyone. Muslim could do, Christian could do, Jew could do, anyone who doesn't even know anything about Hinduism, Sanatan Dharma, Veda could follow these things and will get benefit. Similar thing in the Ayurveda. When we take benefit of the plants, that's the knowledge in Ayurveda, and anyone and everyone makes out use of those. When we eat vegetables, how do we know we need to eat vegetables? And there are certain types of vegetables, certain types of plants, leaves. They all and all are there in Ayurveda, and we all follow. And that's the reason it says Vedic knowledge is for all of us. तो वेदों की जो नॉलेज है वो सभी के लिए है, जिस तरीके से सूर्य का प्रकाश सभी के लिए है। Now, if we see the next thing, it says Īśopaniṣad. Now, there are different ways to pronounce this word, but what does that word mean? This is a truth, and this truth means that there is no ambiguity, and it's self-evident. For example, again, if we take the example of fire, fire burns. Now, we don't really need to prove it. Anyone who will touch it will find out, or anyone who has the experience of touching fire will find out. जो वेदों का ज्ञान है उसको हम अभी हम आगे ज्ञान को भी देखेंगे किस तरीके के ज्ञान होते हैं, पर जो एक्सिमोटिक वर्ड यूज किया है प्रभुपाद जी ने, उसका मतलब होता है सेल्फ एविडेंट, कि ये प्रत्यक्ष है। तो आपको अगर आग को कोई टच करेगा तो आग जलाएगी, इसके अंदर किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर कोई अमेरिका में और इंडिया में बात कर रहा है तो इंडिया का पर्सन अमेरिका वाले पर्सन को कह सकता है आपके पास जो आग हो उसे छू के देख लो। ये तो सेल्फ एविडेंट है कि आग जलाएगी आपको, इसके अंदर कोई आपको बहुत ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। तो जो वेदों का ज्ञान है वो ऐसा माना गया है, लेकिन एक्सपीरियंस करना जरूरी है, एक्सपीरियंस करना जरूरी है, और वो एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपीरियंस हमें गुरु के माध्यम से होता है। इसके आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि काऊ डंग, जैसे गोबर हम लेते हैं, so usually this is supposed to be very bad, the extract of any person, especially of an animal, but cow dung is there which has been used in many medicines. तो काउ डंग को हम प्योर मानते हैं। वैदिक कल्चर के अंदर अगर कहीं पूजा हो रही है तो वहां पे गाव डंग का
लेप लगाते हैं उस जगह को प्यूरिफाई करने के लिए। ये एविडेंट है, कोई भी करके देख सकता है, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा एनालिसिस की जरूरत नहीं है। Is this Vedic injunction? Now, Vedic injunction is something like Vedanta Sutra we were discussing. There was a time people used to say, where is it written? And Avinash is not here today. Avinash asked a question, where is it written? Because this is the way it used to be. If somebody will say, oh, it's written in Vedas, people will follow. No more questions, no more discussions required. Oh, it's written in Veda, because it's called Vedic injunction. It's been announced in Vedas. तो अगर वेद वाक्य हम उसे कहते हैं, तो कोई अगर कुछ कहता था पहले तो ऐसे बात होती थी, क्या ये वेद वाक्य है, बताओ वेदों में कहाँ लिखा है ये। तो अभी ऐसे प्रश्न उठते हैं, और कल हम इसी चीज के ऊपर डिस्कशन भी कर रहे थे कि कहाँ लिखा है, वेदों में कहाँ लिखा है, पुराणों में कहाँ लिखा है, कहाँ है ये जो आरती हम कर रहे हैं, कहाँ है, किसने बनाई है ये आरती, हमें पता होना चाहिए इसका, क्या ये वेद वाक्य है। उनको हम वैदिक इंजंक्शंस कहते हैं। comes from Krishna. What is the source of it? Now we discussed, Mataji had asked a very good question, the difference between the worship and the devotion, bhakti. Now, the main thing is the source. We need to understand the purpose and the source. The knowledge we are getting, whether it's a smriti or smriti, what is the source of it? तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो भी ज्ञान हमें मिल रहा है वो ज्ञान का सोर्स क्या है। अगर हम कहीं किसी को कोई रेफरेंस भी देते हैं तो हम वो जो रेफरेंस देते हैं वो रेफरेंस कहाँ का है, क्या वो ऑथेंटिक है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो वेदों का ज्ञान है वो खुद कृष्ण से आ रहा है, खुद भगवान से आ रहा है। चाहे हम श्रीमद् भागवतम को लें या हम भगवत गीता को लें या फिर श्री ईशोपनिषद को लें, जो डायरेक्टली भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में बताया। मदर गाइड्स टू फादर, इस कंसेप्ट में what Srila Prabhupada is trying to explain is that if you think about a child is born, now the child has just come out of mother, child knows this is my mother, but child doesn't know who is my father, right? Now those days father used to go out a lot and the child is so small to remember, so mother used to introduce to the child that this is your father, this is my husband, and this is your father, right? So similarly the Vedas are that mother which introduced to Krishna as our father. तो जिस तरीके से माँ बच्चों को ये बताती है कि उनका पिता कौन है, उसी तरीके से वेद हमको ये बताते हैं कि ईश्वर कौन है, भगवान कौन है। इसलिए अगर हम अपने ग्रंथ पढ़ें तो हमको बहुत अच्छे से पता लगता है कि सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, भगवान सिर्फ एक ही है, और वो सभी देवी देवता वो एक ही भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। तो मदर इज द वन हु गाइड्स। हरे कृष्णा। प्रभु जी प्लीज। Hare Krishna Prabhu. Just as you are explaining very nicely about the importance of authority, so I will share one Prabhupada pastime on this. Yes. So one time there was a very dear female disciple of Prabhupada, Jadurani, and there was a picture in which a Mahavishnu was drawn. And the posture of Mahavishnu was such that it was ambiguous whether he was lying down or he was standing. So Jadurani asked Prabhupada, is this Mahavishnu standing or lying down? Then Prabhupada told Jadurani, you fast for 5 days, no water, no food, and after 5 days you will come to know whether Mahavishnu is standing or lying down. And after half an hour, Prabhupada said that this Mahavishnu is lying down. And now it is up to you whether you want to fast for 5 days or you want to believe your spiritual master. So if you accept the authority, as Govinda Prabhu is telling, that if you accept the authority and accept what mother is saying, then immediately you know the father. Otherwise, you have to take time out to take the DNA test and all those things, which might take 1 week.
So that is the advantage of accepting the Vedas and taking the authority, that immediately you will be saved, and your salvation will be very quick, basically. Thank you. हरे कृष्ण. थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच. तो प्रभु जी ने जिस तरीके से बताया शिला प्रभुपाद जी का, कि प्रभुपाद जी ने यही बताया, और जो प्रभु जी ने भी कहा कि अगर हम वेद वाक्यों को मान लें तो हमारे लिए काम बहुत ही आसान हो जाता है. आई थिंक अभिषेक जी ने भी लास्ट टाइम यही बताया था कि बहुत इजी है हमारे लिए, लेकिन हमें समझना जरूरी है. द मेन पॉइंट इज वी अंडरस्टैंड द वेदास, एज इट सेज वेदास इज फॉर एवरीवन and everything is true, but we need to understand the true meaning behind it. तो हमें वेदों को समझना बहुत जरूरी है, और इसी में गुरु का रोल आता है. गुरु हमको वेदों के ज्ञान से भगवान तक पहुंचाने में मदद करती है. ये एक प्रमाणिक गुरु का काम होता है. इसी वजह से हमें गुरु की जरूरत होती है, क्योंकि हमको समझ में नहीं आएगा. हाँ, ऐसा हो सकता है कि गुरु के ही, जैसे गुरु क्लास लेते हैं और एक दिन गुरु को कोई काम आ गया, तो गुरु ने अपने ही सीनियर शिष्य को कहा कि आज मेरी जगह आप क्लास ले लो, और वो शिष्य गुरु के से जो इतने सालों से सुनता आ रहा है वही चीज आगे बाकी शिष्यों को बता सकता है. तो वो खुद गुरु बन सकता है अपने खुद गुरु की कृपा से और गुरु के आदेश से. इसको हम गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं. तो गुरु का महत्व बहुत है. थैंक यू सो मच रमाप्रिया प्रभु जी, थैंक यू. हरी हरी. So the next one, it says, I did mention that every one of you, if you don't have it, you can get Shri Īśopaniṣad book, and it is very small book. I will quickly briefly show you. I have it right here, if you can see. It's a very small, very thin Shri Īśopaniṣad. There are only 18 mantras there, and with everything, it's less than 150. It's a 142 pages book, and everything been mentioned here. You see the way this presentation has been done, and this presentation has been done by Radha. I always think of the Maharaj ji, from Radhe Shyam Prabhuji, and Srila Prabhupada ji's paragraphs are also given. So if you will refer back, then you can always pick then in which paragraph what he has said, and that's how we should study also. तो श्री ईशोपनिषद अगर आपने नहीं ली तो नेक्स्ट टाइम आप कभी भी टेंपल जाएं तो प्लीज लीजिए. 140 पेजेस के आसपास पेजेस हैं इसमें. बहुत छोटी सी बुक है, सिर्फ 18 मंत्र हैं. और राधे श्याम प्रभु जी ने जिस तरीके से ये प्रेजेंटेशन बनाई है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हर पैराग्राफ के अंदर से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, और इसी तरीके से अगर हम भी स्टडी करें तो हमको याद करना, समझना और समझाना और डिस्कशन करने में बहुत हेल्प होती है. तो जब भी आपको मौका मिले तो प्लीज इस चीज को आप जरूर लीजिएगा. इसके बाद फुल नॉलेज इज अवेलेबल. सो इट्स नॉट दैट something has been kept secret. It has been given. Everything is revealed. It's not that we need somebody special to, well, of course we need the guru to tell us the true meaning behind it, but all the knowledge is available to us, what we need, what's sufficiently enough for us to take back us to God. तो पूरा ज्ञान हमारे पास में है. 3 kinds of parmana evidences. This is what we will see. This is very interesting. And then the next one, Vedas are divided and put in writing for guidance. So remember what we said when we discussed before, that Rig Veda was the only Veda. Then later it was split based on different purposes. So for example, maths is there. In maths, we have trigonometry, we have algebra, and all of them, they were together in one place. But later somebody said it's better if we make geometry different, trigonometry different, algebra different. So whoever would like to study that can study that. And this is what happens in advanced maths. The similar way, Veda has been divided into different, and then Upanishads, and then Puranas, and then Itihasas.
तो यहाँ पे पूरे ज्ञान की बात हुई। 3 तरीके के जो प्रमाण हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। और वेदों को जिस तरीके से डिवाइड किया गया, जिस तरीके से हमने कहा मैथ्स, गणित सब्जेक्ट जो हिंदी में हम कहते हैं, उसके अंदर एल्जेब्रा आता है, ज्योमेट्री आता है, ट्रिग्नोमेट्री आते हैं। इन सबको इकट्ठे एक बुक में भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन कंफ्यूजिंग हो सकता है। अलग अलग चैप्टर में बांटेंगे तो इजी है, लेकिन अलग अलग बुक्स में हो जाएगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स में हो जाएगा तो और इजी है। रहेगा फिर भी वो मैथ्स ही, रहेगा फिर भी वो गणित ही। इसी तरीके से पूरा जो है वो वेदों का ही ज्ञान है, लेकिन सिर्फ हमारी समझ के लिए उसको अलग अलग बांट दिया गया है। एक वेद को 4 वेदों में, 4 वेदों को बहुत सारे, हम 108 उपनिषद कहते हैं मुख्य, और उसके बाद में पुराण 18 मुख्य मेजर एंड देन 18 माइनर पुराण, उसके बाद में इतिहास। तो इस सब के अंदर वेद ज्ञान ही है। अब इसमें हम 2 चीजें और जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एक जो एनालॉजी बहुत अच्छी दी गई है जैक फ्रूट की, और 3 काइंड्स ऑफ प्रमाण, ये 2 चीजें हम डिस्कस करते हैं। जैक फ्रूट का एक एग्जांपल आता है। जैक फ्रूट, if any one of you have ever tried jackfruit, it's very hard to cut. We get it here sometimes. It's very, very, very hard to cut. We also have, forgot the name of that, the butternut squash. Butternut squash is another big, big vegetable. I think it's vegetable, yeah. And it's very hard to cut it. You peel it and then you have to cut it. Very, very, very hard. Jackfruit is even harder than that. So there was a guy who said to his friend, I would like to eat jackfruit. And he said, I'm coming to India. It will be great if I can have jackfruit. So this friend, he was a good friend. So he said, okay, what I will do, I will buy the jackfruit, I will peel it, I will cut it, then I will present it in a very nice way to my friend. And that's what he did. But this friend, he said, what is this? Because his picture was very different of jackfruit. He said, what is this? He said, this is a jackfruit. He said, no, I have a different picture of jackfruit. This is not jackfruit. So what does that mean? That means same thing could have a different perspective in different people's mind, right? When people ask for something, then they might be asking for something else, even though they are using the same word, even though they are using the same word as jackfruit. But whether they mean the raw jackfruit, what do you get from the tree, or do they mean the processed, in a sense that you peel it, you cut it? Which one do you mean? तो जैक फ्रूट का एक एग्जांपल प्रभुपाद जी देते हैं कि एक अगर कोई मित्र है जिसको जैक फ्रूट देखना था, चाहिए था, और उसने अपने भारतवर्ष में, इंडिया के अंदर अगर उसके कोई मित्र थे, उससे कहा कि मैं आऊंगा तो मुझे जैक फ्रूट आप दिखाना। तो जैक फ्रूट बहुत मुश्किल होता है काटना, लेकिन उसके मित्र ने फिर भी ये कहा कि भाई, क्योंकि मेरे मित्र ने कहा है वो इतने सालों के बाद इंडिया आ रहा है, तो उसके लिए मैं उसे छील के काट के अच्छे से प्रेजेंट करूंगा। लेकिन जब वो दोस्त आया उसका, तो उस मित्र ने कहा, ये क्या है? ये जैक फ्रूट थोड़ी ना चाहिए मेरे को तो वो जैक फ्रूट प्रॉपर ट्री वाला होता है, ये क्या है? मुझे मालूम ही नहीं है कटा हुआ कैसा ऐसा होता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि सेम वर्ड जैक फ्रूट का मतलब डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट पीपल के लिए। सिमिलरली वेदों के ज्ञान के अंदर जब हम खुद कुछ पढ़ते हैं तो उसका मतलब कुछ हो सकता है, इसीलिए गुरु जो है वो उसका हमको रियल मीनिंग बता पाते हैं। Now the time is up. We will start where we have left. How? Remember what we said? We have what, we have why, we have how. So we have discussed why. In why there is only 3 kind of parman, but when we will do how, the very first thing will be parman. And there are actually 6 types of parman. Prabhupada ji mentioned 3 major. We will discuss those. We will see briefly 6, but we will discuss those 3 and we will go further. तो हमने जैसे देखा कि इंट्रोडक्शन के अंदर प्रभुपाद जी ने व्हाट, क्या के बारे में बात करी कि वेद क्या है, वेद क्यों है, हमने डिटेल में देखा प्रभुपाद जी ने अपने पर्पस में क्या कहा। उसके बाद हाउ, वेदों के जो ज्ञान है उसे किस तरीके से समझना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले जो है वो हम प्रमाणों की बात करेंगे। और 6 तरीके के प्रमाण हैं, जिसमें से 3 मुख्य हैं जो प्रभुपाद जी ने बताए हैं।
तो हम उन प्रमाणों से शुरुआत करेंगे और हम श्री ईशोपनिषद के जो इंट्रोडक्शन है उसको नेक्स्ट क्लास में संपन्न करके इन्वोकेशन शुरू करेंगे। और इन्वोकेशन का जो वर्स है बहुत ही प्यारा है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये जिस तरीके से मैंने बोला इससे और अच्छे से बोल सकते हैं, लेकिन हम यहीं से शुरुआत करेंगे। इंट्रोडक्शन फिनिश करके हम इन्वोकेशन शुरू करेंगे नेक्स्ट सैटरडे। सो विद दैट, शिला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधेश। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Hare Krishna.